Let's move on and bring on board Pradeep Kumar, who is from Signature Global, founder and chairman of Signature Global, to talk about expectations actually coming in for the budget 2023, which is tomorrow, especially given in the affordable housing segment as well. Pradeep, thank you so much for joining with us this afternoon on Market Fatafat. And obviously, like I mentioned, expectations for the budget is the key for every person that everyone wants to know. And in the affordable housing segment has been one of the key initiatives of the government as well. So what are you expecting in terms of that? Any changes that you are expecting to boost the real estate demand? What are your takes coming in? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली दो तीन एस्पेक्ट यहाँ पर क्लियर करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग को रीडिफाइन करने की जरूरत है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का जो प्राइस बैंड है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म वो 45 लाख रुपीस का है. आई थिंक सो इसको इंक्रीज करके कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ रुपीस करने की ज्यादा जरूरत है. दूसरी बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस हैं, इस दौरान उनके प्राइसेस काफी अप हुए हैं. तो ऐसे में जो उसके ऊपर लगने वाला जो जीएसटी है उसको कहीं ना कहीं रैशनिंग करने की जरूरत है. क्योंकि अगर आप हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें, हर परिवार को एक घर देने की बात करें, तो वो मिशन जब ही कंप्लीट हो सकता है जब आम इंसान को उसका घर दिया जा सके. और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जो जीएसटी है. वो आज अगर सीमेंट की बात करें तो उस पर लगभग 28% के नियर अबाउट जीएसटी हम पे कर रहे हैं, और स्टील लगभग 18% के नियर अबाउट जीएसटी हम उसके ऊपर पे कर रहे हैं. तो ऐसे में ज्यादा जरूरत है कि जो इन मटेरियल्स पर लगने वाले जो जीएसटी है उसको कहीं ना कहीं स्लैब कट डाउन किया जाना चाहिए. एंड तीसरी बड़ी बात, 2015 में जो सेक्शन आईटी 24 के अंतर्गत सेक्शन 24 है, उसमें 2 लाख रुपए का डिडक्शन दिया गया था, जो आज तक बढ़ाया नहीं गया है. उसको 5 लाख रुपए करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. Right. Pradeep, anything else also in terms of, especially given that interest rates are also rising, so, demand has been impacted for some of the affordable housing as well. So, what is your take coming in on that, and any other change in taxation other than the GST side that you're seeing coming in as well that could help increasing the demand for affordable housing as well? आई थिंक सो जो डिमांड है उसको इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि आम इंसान की पॉकेट तक कैसे पहुंचा जाए. उसके लिए जो सीएलएससी स्कीम है उसको भी अभी अगले 5 साल के लिए और बढ़ाना चाहिए. ऐसा मेरा मानना है कि अगर एक कॉमन मैन तक उसके पॉकेट को अलाउ कराना है, तो जो इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट टाइम काफी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो सीएलएसएस स्कीम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. Okay. Thank you so much, Pradeep, for joining in with us okay, Pradeep, actually, I have one more question coming in as well. And, I'll request you to answer in English as well. So, other than Delhi NCR, there are other major regions which are where the demand has been increasing for affordable housing as well. So, could you give us an understanding on that as well? Where is it that we could see an increase in demand other than Delhi NCR as well? I think so. Agar you're talking about affordable housing, I think so. In all over India, there is a demand in affordable housing. But the thing is that because land prices is very high, so the thing is that if government is supporting for affordable housing, definitely we can provide the housing. So that is my thing. Okay, Pradeep, just want to understand. So, for tomorrow, if you're looking at it in terms of just the affordable housing side, anything specific that you want the government to look at, especially coming in, what should they be watching out for? What should they be actually taking up tomorrow in the budget then? I think so. As earlier told, the GST price on the material side, I think so, it must be reduced. And in terms of redefining of how affordable housing price range, now it's at 45 lakh, it should be 1 crore. So also Q4 also, what are you expecting in terms of Q4 for affordable housing also? What is there in terms of that demand trend that we could see? I think so it's a very, very good for us. So if you're talking about the fourth quarter, it will be very good.
Pradeep. Okay. Thank you so much, Pradeep, for joining with us on ET Now, giving us your expectations for the budget and the affordable housing segment as well.